So the last question that we discussed, which is equality of states, cause equality of power and equality of power is liberty. तो उस पर हमने कमेंट किया, उस पर हमने बताया, गांधी के थ्रू बताया, सारे आइडियाज के थ्रू बताया। अच्छा कोशिश है, उसके अंदर फ्लो भी अच्छा है और वो डिस्कस भी तरह नहीं लग रहा है। और उसमें हमने कॉन्ट्रडिक्शन भी दिया कि क्या होगा तो क्या नहीं होगा। तो आई थिंक दैट इज फेयरली गुड आइडिया एंड उसी को और पॉलिश करना है। Elitist theory of democracy denies the possibility of democracy as the rule of people. Elucidate. तो यानी जो थ्योरी है इलिटिस्ट थ्योरी, उसी को सेंटर में रख के आगे जाना है। तो डेमोक्रेसी आपने बताया डिफाइंड बाय थॉमस पेन एंड अब्राहम लिंकन एंड लेटर Abraham Lincoln later is of by people and for people. It is certain it has got certain basic principles of power, frequent election, limited government, liberty ensured for criticism and defined citizenship. But according to elitist theory of democracy, by according to elitist theory of democracy in works of Plato, of Pareto, correct? हाँ सर, पैरेटो इज बेसिकली मेथड ऑफ elitist theory of democracy. PRETO. Pareto. People have herd mentality. They do not possess capacity to govern themselves. So they are ruled by circulation of elite. The elite possesses political acumen of fear Fox and and land and organizational support as per Mosaic. Similarly, even if masses have choice of leadership, they are decided by party leaders. Very good. Robert Michel, Iron Law of Oligarchy. The masses are not included in decision making. For example, DNC and RNC Convention USA, made of donors and members. Thus, elitist theory is criticized on the basis of being polyarchy and not democracy. Criticism are as follows: elite not accountable to people, they act as governing intellectual. Very true. They create demand for legitimization. Very true, Mark Zuber. People feel they are in power, but in reality they choose, but they have been fed to. This is this is due to use of third dimension power of Stephen Lucas thought control. For example, Russian information 2016, Donald Trump. But on the other hand, even CD Deshmukh has showed, no, the CV Mac version. CD Macpherson had showed idea in different types of democracy that people need political parties for political action. They are busy in everyday life. They delineate power by power to representation. So according to Aristotle, laying down mixed constitution, no, Laying down, sir. Mixed constitution. Laying down. laying down mixed constitution. That is aristocracy and democracy. Democracy आप कहिए. The elites in party should be accountable to masses by convention. With party, debate, youth connection. For example, Indian Party, Aam Aadmi Party, INC and BJP. तो अगर इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम है सर. हाँ, बात तो ठीक है. आप यूएस नहीं. कहिएगा, आप ये कह सकते हैं कि in multi-party democracy in India, there is a chance, या आपको बीच में लिखना चाहिए था, जो कि वो इस मोल्ड को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है, ये दिखता है. इंडिया, क्या आपने बात तो बिल्कुल सही कहा. वो इलीट वाला तो यूएस का बिल्कुल सच है. बिना माल के तो हो ही नहीं सकता. उधर माल होना चाहिए और पैसा चाहिए. फंडिंग के बिना तो कुछ भी नहीं होगा. पर हमारे यहाँ तो बिना फंडिंग के भी हो जाता है ना. मास पार्टी अपना वहां पर सर. हमारे यहाँ थोड़ा है ना. हमारे जैसे अभी, जैसे आप श्रीलंका में देखिए, जो जीता है अभी एक्सट्रीम लेफ्ट पावर जो आई है, हाँ सर. that is not because that is because of the idea that it will be removing corruption, it will be removing opaqueness, it will be bringing transparency, it will be bringing pro people stand. Marginalized people बहुत ज्यादा हैं इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज में. यूएस में उतना मार्जिनलाइज पीपल नहीं है. वहां दूसरा केस है. वहां ओवर कंज्यूमरिज्म, ओवर डेवलपमेंट, सब कुछ ओवर है. वो हेजीमोनी है उसके पास हर चीज. तो उसका लड़ाई दूसरा है. तो इसीलिए इलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी पीपल सेंट्रिक नहीं है वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से.
पर इंडिया में द्रौपदी मुर्मू जी बने ना हमारे राष्ट्रपति, इट इज एन एग्जाम्पल की रूल ऑफ द पीपल वो उसके रिफ्लेक्शन है। फिर भी यहाँ भी है इशू, 33% अभी नहीं आया है, और बाकी बाकी इश्यूज वी आर प्लेइंग विद। वो अच्छा लिखा, लेकिन आपको ये आम ये सब लिख गड़बड़ कर दिया लास्ट। चलिए, एग्जामिन द लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स। Contemporary politics is very complex due to interconnectedness of world, high awareness, case of public advocacy campaign, as assessed by CDS listening. People is much more aware of politics than earlier due to internet, media, and public debate. नहीं, नहीं. People are much more aware of politics because they have been looted for a very long time. They have been deprived of their basic rights for a very, very long time in spite of technological development. So political parties and political leadership had been forced to change their, change करना पड़ा है उनको. It is here that liberal theory of state fulfills the liberal theory of state is forced to fulfill basically aspiration of people because it is a limited government as you are writing. Social contract बोल रहा है, separation of power भी है, फंसेगा वो. Power to the people, deliberative democracy आना आट, liberty and rights ensure all theory of justice. Assessment of liberal theory of state, it has been able to fulfill aspirations of people. J.S. Mill, positive liberty, welfareism, जैम ट्रिनिटी का आप एग्जांपल दे रहे हैं, नॉट फुलफिल, इट इज ऑन द वे, इट इज रिफ्लेक्टिंग दैट इट हैज बीन एबल टू कीप चेक ऑन टीएनसी एक्सप्लॉइटेशन एंड ensuring social welfare, enforce the spirit of constitutionalism in everyday life. It is reflecting in everyday life. I agree, ठीक है. Supreme Court introduction या interpretation of the procedure established by law to due process in 1978 Minta Gandhi case. Spirit of constitutionalism in India is reflected through public interest litigation आना चाहिए. चलिए, uphold the idea of liberty and चलिए आगे, and constitutional rights to its citizens. Brand inclusion of abortion in fundamental rights. Okay. रीइन्वेंटिंग, देखो शुरू में हमने शुरू किया आंसर इंडिया सेंट्रिक था, बीच में फिर हम अचानक से ग्लोबल एग्जांपल ले आते हैं, फिर इंडियन हो जाता है. ऐसा नहीं होना चाहिए. देयर मस्ट बी a structure. Reviewing its stand on new issues. So India is one of the country, no? That is why. तो शुरू में So इंडिया, शुरू शुरू में में फिर हाँ. वर्ल्ड नहीं सर, वो लिबरल थ्योरी समझाना है ना, मैं वह नहीं लिखा हुआ कि एग्जैक्टली कि कोई एग्जांपल वर्ल्ड का लेना है फिर ऐसा कुछ. ठीक है, ठीक है. At the same time, it has been criticized by scholars. It enforces changes rather than being deliberative from community itself. Thus leads to possessive individualism in outlook. Clear? Individualism in outlook, as stated by Michael Sandel. Justification of suicide in Sweden. Very good. Multicultural and post-colonial author like Edward Said says that liberal theory is hegemon of idea of West. Yeah. Not include Asian values for making it more inclusive. Very good, yes. Family and GNP, GHI, so on, so forth. Focusing upon state intervention lead to culture of rent seekers, as stated by Herbert Spencer. Subsidies-based policies. So liberal theory of state is reinventing itself in every decade for being open to change, acceptance, adaptable to society's aspirations on the basis of Amartya Sen. Liberal theory is a close to open society as it promotes the idea of participatory and deliberative democracy. The infusion of Western and Asian values will, I think, last paragraph definitely it brings to the coherence, and in the beginning also it is okay. But way more, the more faster you will write, and then there is a kind of a connectivity, then it will be. It is definitely bringing all the ideas, but the couple of words can vocabulary can make a lot of difference.
Human rights are complex and contested social practices that organize relation between individual society and the state community. Complex and contested social practices. This is the key word. चलिए. Human rights has been an evolving and contested subject which needs constant support from philosophers and active citizens to make it more universal. आप इसकी जगह शुरू में ही बोल दीजिए कि it is the most contested social space because state and different state theories they want to put across their understanding in such a way that all human rights are not recognized और चाहे फिर वो कुर्द हों चाहे फिर वो उइगुर्स हों चाहे फिर वो रोहिंग्याज हों चाहे फिर वो तमिल श्रीलंकन तमिल्स हों चाहे फिर वो माइनॉरिटी इन बांग्लादेश हो चाहे फिर वो माइनॉरिटी इन इंडिया या जो भी बोलना है आपको that is why it becomes a contested space because everybody wants to interpret it the way that the majority or the state interpretation benefits Palestine Israel Palestine issue that is why it is a hugely contested space. Yours human right may not be acknowledged because it is harming my interests. तो बिल्कुल सही बोला आपने ठीक है यूनिवर्सल राइट ह्यूमन राइट कॉन्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स फंडामेंटल राइट्स फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स political equality as propounded by various thinkers such as J.S. Will, first view of feminist movement, Mary Wellstone, focuses on universal frontline for women, the rights of worker and presence in political scenario were supported by trade unions, AITUC and communist unions. Later on, second generation rights, it demanded more socio-economic agenda from state as well as reform in society. The legislation on abolition of child marriage, child labor, SC/ST. Similarly, in USA, Civil Rights Act 1950 are prominent. Deliberation of civil society and political parties over issues made society more aware and reform. For example, debate over abortion, gun control laws, the next generation rights, new avenues were looked after like environment, health, animal rights. It was a sub point, a sub part of the new social movement 1960s, 80s, and 90s. For example, MC Mehta environmental activism, Rio 1992, prevention of animal cruelty 1960. All three required raising social consciousness beyond basic liberty of society. The state became facilitator via progressive legislation, whereas society became more nuanced and open. हाँ Although, although contestation took place, Shah Bano case, Black Panther, but slowly through increased awareness of individual TH Green, the demand of new rights become acceptable. Individualism in आगे चलिए ओके आगे सर चलिए ओके तीन थे सर तो ठीक है ये मतलब आपने अच्छा कोशिश किया लेकिन जो मैंने पॉइंट बोला पहले वो आना चाहिए हाँ सर that element you have to bring you can't write just about plainly about that individualism is inherent in Hobbes absolute ideology कमेंट करना है इस पे, क्योंकि उस पे भी कमेंट था 15 नंबर का वो भी मांग रहा है पूरा ये individualism in Hobbes thoroughness with condition theory of self-preservation of Thomas Hobbes is basic principle of human in state of nature which later entered into one-time social contract Levithanian. After that, individualism is then submitted to absolutist state. Absolute state. The state is idea of Hobbes is beyond contract with member, enforces law and order, direct the goal of society, gives justice for all. His love for liberty is why social contract was signed, as in Levithanian, the state is not having the character of common man, that is having desire for power, lust, greed. The unlimited political obligation that is contract cannot be
null and void by member has been criticized as not adhering to individualism as propounded by Hobbes himself. Okay. Individual does not have the power to revolt as per Locke, limited sovereignty. State is not fulfilling basic demand of liberty, right to property. The Hobbesian state is close to Hegel's idealism, but without ethics. The Hobbesian state can preserve itself with right to declare war and enforce law and order, Austin theory of sovereignty, but the members cannot make state accountable like Senate in Britain. Fine, ठीक है चल रहा है. So Hobbes state is paramount, absolute, and perpetual, which preserve itself and members of life and liberty. So, on comparison to others' theory of state, from feminist perspective, Hobbesian state is patriarchal in nature due to justified violence. Whereas without clear vision within the state, it is much more powerful than Plato's philosophical being, because at least Platonic state is accountable to the which ideas? To the republic ideas. The Republic Huh? book is ideal. Philosopher King has to be accountable to the Republic book. आ रहा है 15 नंबर में तो काफी लिखना ही है ठीक है सही है चलिए नेक्स्ट 8. द एथनिसिटी इज नहीं 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 हाँ 8 number हम्म the ethnicity is underlying cause which was a great challenge in the resolution of the problem in northeast of India. Comment. Paul Brass has commented on the identity politics in India based on ethnicity, language, caste, and religion. According to problem faced in northeast based on ethnicity, resolution of problem faces great challenge. आपने challenge बता दी प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट कल्चर उसके बाद आपने बता दिया आर्टिफिशियल बाउंड्रीज उसके बाद आपने थ्योरी ऑफ एलिनेशन ऑफ सब ट्राइब्स रुडोल्फ का आपका थ्योरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन लीडिंग टू व्हाट प्रोकेलिज्म protectionism among the tribes. अकॉर्डिंग टू रजनी कोठारी Kothari. ethnicity as a standalone does not preserve national security challenge when Present it merges national. with identity like language or religion then it creates a destabilizing threat. For example, Manipur crisis, Kuki, Methi. So to resolve the issues, Paul has focused on the state of Indian government stand on ethnicity. Rejection, outright demand of new country, innovative solutions for accommodating tribes, ethnicity demand, no talk with armed insurgents and violence, negotiate with leaders in the peaceful way, NSCN, that is Nagaland Socialist Council of Kaplan, Isaac Mohua Group, IK, and IMO creating sir. package. Oh, हाँ? IMO I can know K तो नहीं होगा IMO. ठीक है चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं उसके बाद आपने बता दिया ब्रू ट्रीटी ब्रू सेटलमेंट का बात किया त्रिपुरा में है वो ethnicity poses much more threat to several issues as stated by Atul Kohli lack of organization unlike victories unlike in days of India presence of rough terrain hunting gathering logistic infrastructure capacity of left government powers. So to deal with Northeast ethnicity, over the years, Indian government is focusing on several solutions. Department of Energy Development, Six Schedule Governance, self-government theory, connecting Northeast with Act East policy, solidarity in prosperity as per Raja Mohan, capacity building of Northeast tribes via self-help group village level entrepreneurship on the basis of Amrita Sen capacity approach. I think fair enough. एक आध लाइन चाइना म्यांमार इन सब पे भी आना चाहिए था कि वो भी इनडायरेक्टली डंडा करते रहते हैं the Northeast ethnicity requires 360 approach to resolve one of the longest insurgency division in post-independence. Recent Rehab. rehabilitation लिख दिया rehabilitation of several insurgents of group Bodo NSCI and offer huge opportunity to resolve ethnicity issue. Fair enough, you are not very critical and you are able to bring the point. The making of Indian Constitution described as an attempt towards a social revolution. चलिए जरा
Jawaharlal Nehru described Constituent Assembly as a nation as a nation on throne. Move. Um, Nation on throne. Yeah. Move. Making of Constitution had not started after 1947. Constitution Assembly, but during the national movement. सही बात चलिए आगे. Constitution making was an attempt towards social revolution, adhered to socialist principle, socialist revolution, but in a peaceful way. Hmm. कराची Hmm. 1931 बिल ऑफ राइट्स वो सब ठीक है, चलिए आगे चलिए. रिजर्वेशन ऑफ एससी एसटी, चलिए सोशल रिवोल्यूशन से ज्यादा है बल्कि अपने आप में ये. However, some have not supported it as a social revolution. Constituent Assembly taking on duty of deliberating upon the constitution was not based on direct franchise. Most of them were from upper castes. Upper caste review, UP Madhya, the main provision was Hmm. from GOI Act 1935, had colonial legacy of Section 129A, emergency powers. Although it has some provision which needed more discussion, still the highlights as reflected by Vipin Chandra, Congress, Rainbow Coalition, aspiration of sections, pragmatic, more practical challenges. Even in the non-Congress government, most were retained business as making of Indian Constitution, which started in Nehru 1998. Making of the Indian Constitution, which started not only just with Nehru, but it started with the ideas of Dadabhai Naoroji. Hmm. और ऊपर से फिर आप बोलिए हाँ सोशल रेवोल्यूशन तो था, लेकिन सोशल रेवोल्यूशन के बावजूद ये मार्क्सिस्ट नहीं है, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन नहीं है, इसीलिए ये पीसफुल रेनबो Hmm. रिवोल्यूशन है. Yes. तो इतने सारे गरीबों को, इतने सारे वर्कर, इतना बड़ा देश, इतना ज्यादा डाइवर्सिटी, इतना सारा एथनिसिटी, इतना सारा लैंग्वेज के बावजूद भी हमने डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर लिया, तो सोशल रिवोल्यूशन तो वर्ल्ड के लिए है ही है. हाँ. वो आपको लेके आना पड़ेगा. थोड़ा सा मतलब डल हो गया ये. How far is it correct to say that regional parties have strengthened the Indian democracy and federal system? Substitute answer with suitable examples. चलिए. India regarded quasi-federal according to given Austrian and however regional parties have played important role in percolating the spirit of federalism and grassroots level by the rise of OBC parties. SP, RJD, JDU have been termed as silent revolution by Pratap Bhanu Mehta. They have made center more accountable socially. Regional parties have enforced spirit of competitive bargaining and federalism. Rajni Kothari. चलिए. Regional parties creates regional hegemony on caste, language and ethnicity. ठीक है. Regional parties act as political federalism by centralizing to centralized, for example, Indian alliance. ठीक बात है. चलिए. However, some scholars have criticized regional parties not adhering to spirit of fraternity. Anti-Bethel criticism of caste politics. ठीक है. चलिए. Pratap Bhanu Mehta have criticized regional parties of becoming catch-all parties. For example, MBA, which leads to democratic confusion among people. हो सकता है. Further, Paul Grass said the ethnicity, language, caste, regional party only lead to ever economic reform and political backfoot. हाँ? क्या political? हाँ सर. Reform the political backfoot. हाँ. Caste, caste service demand by different parties. So regional parties need to be more aspirational. नहीं, need to be more cooperational. क्या लिखा है? Aspirational center of India. Center of India. As where their regional identity, they play the position by becoming member of alliance, for example, NDA or UPA. Question is demanding कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन इज सेइंग दैट हाउ रीजनल पार्टीज आर स्ट्रेंथेंड इंडियन डेमोक्रेसी. वो तो कहाँ है? इंडियन डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रेंथन किया? तो इंडियन डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया है, मतलब हाउ फार इट इज करेक्ट टू से. तो आपने तो बल्कि ठीक है, यू हैव बिकन बोथ द पॉइंट, लेकिन इट इज करेक्ट टू से दैट रीजनल पार्टीज आर स्ट्रेंथन इंडियन डेमोक्रेसी, क्योंकि रीजनल पार्टीज भी अपने आप में पहले public was dissatisfied with the existing so-called great national party, one great national party, and then different sprouts are emerging. So itself it is strengthening of strengthening of Indian democracy when when our constitution is providing enough scope and enough sensibility among the masses that their aspirations can be fulfilled.
तो इसीलिए रीजनल पार्टीज रिफ्लेक्ट द डाइवर्सिटी एंड द डेप्थ ऑफ द इंडियन रीजन्स which are connected with the Indian Union in a great way, like a soul of a body. फिर आप जो आपने लिखा है वो लिमिटेशन जो थोड़ा बहुत है वो क्रिटिसाइज कर दो कि जिसका मौका मिला उसके साथ बैठ लिए, हाँ सर। पलट गए, वो लिखना था ना। तो वो तो आपने पहले वाला पार्ट तो नहीं किया। ये बिल्कुल करेक्ट है। बोलो क्या बीजेपी क्या था शुरू में? आम आदमी पार्टी एक दिन जब शुरू हुआ था क्या था? या कोई भी तेलंगाना का जो मूवमेंट चला वो क्या है? कोई भी पार्टी शुरू में भारत को जो रिप्रेजेंट कर रहा है कांग्रेस के अलावा क्या था बताइए? हाँ सर। तो थोड़ा सा मतलब और ब्रॉड लेना पड़ेगा। तो आपने धोया है पकड़ के उसको, धोना है, लेकिन ये भी बताना है कि भाई वो है, हाँ बिल्कुल है ना। अब अकाली दल ने पंजाब रीजन को रिप्रेजेंट तो किया ही है। जब वो लोगों की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, जब वो लोगों के एस्पिरेशन से हट गया है, तो लोगों ने भी उसको हटा दिया ना। हाँ सर। जैसे आपने ये दिया तो रीजनल पार्टी हैव इन्फोर्स स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव बार्गेनिंग फेडरलिज्म, सब अच्छा है, लेकिन आई जस्ट वांट मोर, थोड़ा फ्लो में आ जाए ये। अच्छा हाँ सर। लिखा है। और कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, ओके सर। सो व्हाट इज योर टेक अवे? सर माय टेक अवे इज दैट कि जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है ना, उसको बैक ऑफ द माइंड में रखना है, लेकिन अब क्या करना है, जो जीएस के पर्सपेक्टिव से जो मैं ड्राइव करूँ आंसर वैसे ही लिखूंगा। एड ऑन बस थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव रादर देन थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ड्राइव द क्वेश्चन। यू हैव टू ड्राइव द बिल्कुल। आर्गुमेंट, एंड बाय वो सपोर्टिंग द रिलैक्स। आर्गुमेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव कैन बी यूज्ड। भाई इससे जैसे थोड़ा आप, आसान, उससे लूसिड हो जाएगा पूरा। जैसे एक रीजनल पार्टी मान लीजिए तमिलनाडु में डीएमके है, आईडीए आईएडीएमके है, उसने कोई अन्ना स्कीम लाया, कुछ भी लेके आया, उसने वहां पे उसको पॉपुलर किया, वहां पे फिट हो गया पायलट प्रोजेक्ट। हाँ सर। वो पायलट प्रोजेक्ट के सेंटर उठाता है ना, कालिया स्कीम उठाया था, हाँ। हाँ सर। तो रीजनल पार्टी तो बोलने का है, आप हमें, आपको जेपी नड्डा स्टाइल में थोड़ा ना लिखना है कि भाई हाँ कुछ ऐसा नहीं। आपको तो नीचे से ऊपर उठाना है। ह्यूमन राइट में भी आपको ध्यान रखना है, हाईली कॉन्टेस्टेड वर्ड आते ही कान खड़ा हो जाना चाहिए। क्यों है कॉन्टेस्टेड? नहीं कौन सर, दे रहा है? पॉजिटिवली, पॉजिटिवली इसको लेना है। जो भी कंटेस्टेड हो गया या कुछ भी, सब में पॉजिटिव लेना है, क्योंकि जनरली हाँ हम लोग ह्यूमन राइट में प्रोग्रेस हुए हैं ना पिछले 40-70 साल लॉजिकली और जी। फैक्चुअली, तो भी नहीं नहीं, इम्पोर्टेंट है। आप समझिए, आप थियोरिटिकली कितना भी लिखेंगे उसको, ये हुआ उसका नंबर नहीं मिलता। हाँ सर, वही इसलिए बता रहे कि वो जीएस पर्सपेक्टिव से लिखना है, लेकिन बस सपोर्ट में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल, कोई एग्जांपल जैसे आपने बताया अम्मा कैंटीन को, गया द मॉडल विच हैज बीन डेवलप्ड बाय द रीजनल पार्टी became important, became popularized by center. This showcases the initiative taken by the regional party. एग्जाम्पल होता है ऐसे करके सपोर्ट में, rather आई एम than टॉकिंग focusing on अबाउट, हाँ जो थ्योरिस्ट हो गया करना है। कम्युनिटी। लेकिन नहीं वो साइड थ्योरी, रहेगा सर, वो मतलब सपोर्ट बात, में रहेगा सर, ड्राइव नहीं करेगा देखिए वो। बात बिल्कुल ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है कि महाविकास आघाड़ी कैन क्रिएट डेमोक्रेटिक कंफ्यूजन बिकॉज द डिफरेंट रीजनल पार्टीज आर कमिंग टुगेदर, आई एग्री। बट द क्वेश्चन अराइजेज व्हाई दैट केम इनटू बीइंग। तो उसका दो एस्पेक्ट है। एक, आवर पॉलिटिकल स्पेस इज सो डायनेमिक दैट political party, even when they are coming together and they are bringing the people's aspiration together in one plate, then people are ready to accept. हाँ सर। And two, national party is not fulfilling the role. So each region, if it is strong, if for example, if Northeast would had a large population, then do you think it would have been languishing in spite of having so many regional parties in a separate way? Would it have been languishing like that? नो सर। तो बस वो आपको रियलिटी लेके आना है ना, तो फील कराना है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नॉर्थ ईस्ट का उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना यूपी का पूरा इंपॉर्टेंट है, पूरा ये यूपी सर। भी नॉर्थ ईस्ट इतना ही इंपॉर्टेंट है। ये लाना है ना आपको, तो पॉलिटिकल थ्योरी वो है ना, पॉलिटिकल थ्योरी। हाँ सर, वो स्लाइड चेंज करना तो हो जाएगा ऐसे। हाँ सर, बस। So thank you very much, and we will soon have deliberation and discussion of this whole learning exercise. You can revisit the session and you can write back your comments also in the comment box. Thank you very much. थैंक यू सर।